नमस्ते। नमस्ते to everybody. नमस्ते सर। नमस्ते आप सभी को भी सायंकालीन सत्र में उपस्थित होने पर आपका स्वागत। आइए भगवान बुद्ध की अर्पणा एवं प्रारंभिक वंदना के साथ सत्र को आरंभ करते हैं। वे जो हैं भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धर्म, धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ, उन भगवान बुद्ध, धर्म और संघ की हम यथोचित सत्कार से पूजा करते हैं। हमारा सौभाग्य कि भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी। आदर पूर्वक दी गई यह तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें। हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध, उन भगवान बुद्ध का मैं अभिवादन करता हूँ। भगवान के द्वारा अच्छी तरह समझाया गया धर्म, उस धर्म को मैं नमन करता हूँ। भगवान के श्रावक संघ, जिन्होंने मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित किया, उस संघ को मैं नमन करता हूँ। आए हम भगवान बुद्ध की प्रारंभिक वंदना करें। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। नमस्कार उन्हें जो है अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध। आए हम भगवान बुद्ध का अनुस्मरण करें। भगवान बुद्ध की अच्छी कीर्ति इस प्रकार फैली है। ऐसे है भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध, ज्ञान और आचरण से संपन्न, सुगत एवं लोक ज्ञाता, भटके हुए मनुष्यों को संयमित करने वाले अनुपम सारथी, देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध। आए हम भगवान बुद्ध के गुणों का पाठ करें। भगवान बुद्ध जो श्रेष्ठ अरहंत हैं, उत्तम गुणों से युक्त हैं, शुद्धता, अति उत्तम प्रज्ञा एवं करुणा के पुंज हैं, जो समझदार मनुष्यों की बोधि जगाते हैं, जैसे सूर्य कमल को खिला देता है। उन अहिंसक जिनका मैं सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। भगवान बुद्ध जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, मैं पहली अनुस्मृति के रूप में उनका सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं भगवान बुद्ध का दास हूँ और बुद्ध मेरे शास्ता हैं,
मैं भगवान बुद्ध को यह शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ। मैं श्रद्धा पूर्वक भगवान द्वारा बताए गए बोधि के मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है। भगवान बुद्ध ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्रा की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। भगवान बुद्ध की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हों। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने भगवान बुद्ध के प्रति दुष्कृत्य किए, भगवान उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करें, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। आए हम धर्म का अनुस्मरण करें। जो धर्म भगवान ने अच्छी तरह समझाया, यही स्पष्ट दिखता है। काल अतीत है, अन्वेषणा को प्रोत्साहित करता है, अंतर्मुखी करता है। प्रत्येक प्रज्ञावान को व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है। आए हम धर्म के महान गुणों का पाठ करें। भली प्रकार से समझाया गया ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसके मार्ग और फल परियत्ति और मोक्ष दो आयाम हैं। जो धर्म को धारण करते हैं, उन्हें नीचे लोकों में गिरने से बचाता है। अंधकार हटाने वाले इस श्रेष्ठ धर्म की मैं वंदना करता हूँ। धर्म जो सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है, दूसरी अनुस्मृति के रूप में सिर झुकाकर मैं उसका वंदन करता हूँ। मैं धर्म का दास हूँ और धर्म मेरा श्रेष्ठ स्वामी है। धर्म को मैं अपना जीवन और शरीर समर्पित करता हूँ। धर्म की वंदना करते हुए मैं धर्म के श्रेष्ठ मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है। धर्म ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शरण है। इस सत्य वचन के प्रभाव से शास्त्रा की शिक्षा में मेरी प्रगति हो। धर्म की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने धर्म के प्रति दुष्कृत्य किए, धर्म उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। आए हम संघ का अनुस्मरण करें। धर्म के मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ। धर्म के मार्ग को सीधे प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ। धर्म के मार्ग को ज्ञान पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ। धर्म के मार्ग को निष्ठा पूर्वक प्रतिपादित करने वाले भगवान के श्रावक संघ। जो है चार युगल और 8 प्रकार के आर्य, ये हैं भगवान के श्रावक संघ। वे हैं भेंट देने योग्य, आतिथ्य के योग्य,
दक्षिणा देने के योग्य और नमस्कार के योग्य इस लोक में अतुलनीय पुण्य क्षेत्र। आए हम संघ के महान गुणों का पाठ करें। सद्धर्म से उत्पन्न सद्गुणों से युक्त संघ इस मार्ग को अच्छी तरह प्रतिपादित करता है, जो 8 आर्यों का श्रेष्ठ संघ है, जिनकी काया और चित्त शील आदि धर्म से युक्त है। उस शुद्ध आर्य संघ का मैं वंदन करता हूँ, जो संघ सभी प्राणियों की उत्तम सुरक्षित शरण है। तीसरी अनुस्मृति के रूप में मैं उस संघ को सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। मैं संघ का दास हूँ और संघ मेरे श्रेष्ठ स्वामी है। मैं संघ को अपना शरीर और जीवन समर्पित करता हूँ और संघ की वंदना करते हुए उनके द्वारा अच्छी तरह प्रतिपादित मार्ग पर चलूंगा। मेरी कोई और शरण नहीं है, संग ही मेरी श्रेष्ठ शरण है। मेरे इस सत्य वचन के प्रभाव से मैं शास्ता की शिक्षा में आगे बढ़ूं। संघ की वंदना करने से जो पुण्य मैंने यहाँ अर्जित किए हैं, उनके प्रभाव से मेरी सारी बाधाएं दूर हो। मन वचन और कर्म से जो भी मैंने संघ के प्रति दुष्कृत्य किए, संघ उनके लिए मुझे क्षमा प्रदान करे, जिससे मैं भविष्य में संयमित रहूं। सेशन को सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। और हमने निर्धारित किया था कि कुछ दिन और रूपखंड के ऊपर काम करेंगे, तो we'll see कि चक्षु विज्ञान के माध्यम से जो चक्षु विज्ञान के माध्यम से जो रूप हमें दिखता है, उसके कारण पांचों खंडों के ऊपर कैसे असर पड़ता है स्टडी कर रहे थे। तो कुछ दिन और बाकी इस हफ्ते इसी पे काम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले 15-20 मिनट हम समाधि का अभ्यास करते हैं, और फिर जो फिजिकल फॉर्म है उसका फिर साधना करेंगे। जैसे थोड़ा उसको संक्षेप में मैं रिपीट कर दूंगा इंस्ट्रक्शन, देन विल प्रैक्टिस। अभी 20 मिनट करीब हम समाधि का अभ्यास करते हैं।
प्रैक्टिसिंग विजुअल फॉर्म को सामने रखते सी हाउ इट अफेक्ट्स अस। जैसे हमने चर्चा की थी कल डिटेल में कि जो भी प्रोमिनेंट फॉर्म हमारे मानस में कोई इमोशंस लाती है, इसको सामने रख के सी एंड फील व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, और अपने जो पांचों खंड हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है उसको देखते हैं। और ये संस्कार जाग रहा है, साथ साथ में शरीर पे होने वाली वेदना को महसूस करते हैं, किस तरह के धातुएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अनित्य हैं, और उसके अनित्य बोध के आधार पर हम समता बना के रखते हैं। जो मन में संस्कार जागा है उसको भी शमन होने का मौका देते हैं। तो इस प्रकार कम से कम एक रूप या एक से ज्यादा रूप जितना भी हम कर पाए, इसके प्रति हमारा जो द्वेष है या उसके कारण जो राग जागता है कम हो जाएगा। और साथ साथ हमें पांचों खंडों का ऑपरेशन समझ में आएगा। जैसे कल भी चर्चा हुई थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम वेदना को पहचान नहीं पाते हैं। वेदना तात्पर्य चक्षु स्पर्श या वेदना। चक्षु ने कुछ देखा या मन ने कुछ इमेजिन किया, और मन के ऊपर मन में हमने एक पिक्चराइजेशन की इस वस्तु की, इस व्यक्ति की, इस एनिमल की, जो भी उसके जागने से जो वेदना जागती है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। हम लोग शरीर को देखने में इतने एक्सपर्ट हो गए तो बाकी इंद्रियों पे जो वेदना जागती है उसको पहचान नहीं पाते। तो उसके लिए हम कोशिश करें कि प्रतिक्रिया होने से पहले ही वेदना को जान लें। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए अभ्यास हो जाएगा जीवन में भी, कि वेदना को पकड़ लें ताकि प्रतिक्रिया ना हो और संस्कार न बने। और जब संस्कार जाग जाए तो फिर वी वर्क ऑन इट, ताकि वो संस्कार का निरोध का अनुभव हो। अगर संस्कार निरोध में दिक्कत हो, खासतौर पे जो रागात्मक संस्कार हैं उसको उसके प्रति एक बार दिक्कत हमने संस्कार का निरोध भी देख लिया तो फिर तुरंत जाग जाता है, क्योंकि हमारा परसेप्शन बना रहता है कि ये बहुत प्रिय है, ये प्रिय है। उसके अनित्य बोध की ओर हमारा ध्यान होगा। तो जो बाकी तीन बातें थी, आस्वादन, आदिनाव और निस्सरण, जो उस पर्टिकुलर रूप में जो आस्वादन है हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो अच्छा लगता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और उस अच्छा लगने में जो डेंजर है उसको भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये इसमें डेंजर है। इस अच्छा लगने के प्रति हम अगर सजग ना हुए तो इवेंचुअली हमारे जन्म जन्म का चक्कर चलता ही चला जाएगा, क्योंकि रागात्मक संस्कार बढ़ता चला जाएगा। और एक और बात जो स्पष्ट ही है कि जो जिसके प्रति राग है वो कभी ना कभी देर सवेर बदल जाएगा, और फिर हमें उतना ही दुख होगा जितना कि राग। तो इन सब बातों को विचार में रखते हुए हम साधना करने का प्रयास करते हैं, और पांचों खंडों पे किस तरह से उनका आपस में सामंजस्य होता है, किस तरह से चक्षु पे रूप पड़ा, और या मन में एक फॉर्म आई, इमेज आई, मन में एक विचार आया, और कैसे वेदना जागी, और वो वेदना किस तरह से संज्ञा से रिलेटेड है, और उस वेदना को न देखने से किस तरह से प्रतिक्रिया होती है, संस्कार जागता है। हम तोड़ तोड़ के इन सब चीज़ों को देखने का अभ्यास कर सकते हैं, वो अपने में ही बहुत लाभदायक है। So keeping this brief suggestions in mind, let's practice for another half an hour. इसे रिक्वेस्ट है कि 8:15 पे घंटी बजा दें, ताकि हम उसके बाद वही चर्चा की आवश्यकता हो तो चर्चा कर लें, और
परिपचास ओके सर।
पायल जी ने हैंड रेस किया हुआ है सर, कैन शी आस्क? Yes, yes. Yes, Payal, you can speak out. सर ये जो हम देख रहे हैं ये पतज्य समीपात देख रहे हैं ना, अभी जो हम कर रहे हैं. That also you can say, in some sense, they're all interrelated. No? हाँ जी. Riches अच्छा, part explains the sequence in which the things are happening. सर एक जैसे आपने बोला देखने के लिए वेदना, तो जैसे मैंने देखा तो नहीं, चक्षु वाला तो नहीं किया, बट माइंड में ऐसे सोचा, तो मैंने इमेज क्रिएट किया चीज केक का, हाउसवे का, तो मेरे मुंह में आई कुड फील दिस सलाइवा एंड आई कुड फील एकदम से वो हो गया. तो ये क्या है? ये रिएक्शन है क्या? ये क्या क्या था? ये फिजिकल रिएक्शन हुआ? Yeah. तो ये तो स्प्लिट सेकंड में हो गया, तो आप पकड़ोगे कैसे? दिस इज आई थॉट एंड इट हैपेंड. सो आई डोंट नो वेदर आई लाइक्ड इट और डिसलाइक्ड इट, वो तो पता नहीं चला, बट मुंह में वो पता चला दैट इट वाज वाटर एलिमेंट आया. और वो तो ये इतना फास्ट उसमें तो. So we see it over averaged over a few seconds, many seconds, depending on कितनी हमारी कितना रैपिडली हम सजग हो पाते हैं. तो अगर जब मैंने वाटर देख लिया, उसका क्या, उसके आगे क्या? जस्ट दैट आई सॉ. आपने क्या इमेजिन किया? लेट्स पुट इट अगेन. मैं चीज केक और हाउसवे ऐसे. समथिंग, या यूजुअलाइज समथिंग जिसके प्रति आपके मन में राग है. हाँ हाँ. और उसके हाँ, टेस्ट के प्रति राग है. So the हाँ. moment you put that picture in the mind, the perception is already there. The Vedana of that kind arises, reaction happens, and that reaction manifests in different form. The increase of saliva. इतना फिक्स्ड है वो कि उसको हम नहीं देख पा रहे हैं. तो अगर हम बैकवर्ड वर्क करें, if you work backwards, okay, there's a, obviously you are, the thought is arising of this being, and there's already a perception about that food stuff कि वो बहुत अच्छा है, वो टेस्टी है. उसके कारण the reaction is so quick that the opportunity to see the feeling doesn't arise. So what should one do? इस आस्वादन तो है ही है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आस्वादन तो है, और उसके डेंजर क्या है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे. So when you reflect on the danger, then the impact of the, I mean, if you do it properly, repeatedly, then the impact of that object on the mind will reduce. क्योंकि जो परसेप्शन हमारा उसके बारे में है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, क्योंकि हम उसमें खतरा भी देखने लगेंगे. अभी तक तो हम उसमें खतरा देखते ही नहीं हैं. तो जब उसमें खतरा देखते हैं, उसकी शॉर्टकमिंग को देखते हैं, because of its impermanence, because of the fact that attachment to this will give rise to so strong sankhara and result in another birth, another birth. So if we contemplate in that manner very deeply, तो धीरे धीरे उस आदिनव ज्ञान के कारण संज्ञा में थोड़ा फर्क आता है और हम उसको ठीक से देख पाएंगे. तो हमको मालूम पड़ने लगेगा कि प्रतिक्रिया कम हो रही है. We carry it on again and again and again. Then we bring the item actually in front of us. So we can imagine किया, ये तो बड़ा आसानी से घर में निकाला के सामने रखा जा सकता है. We can practice like that. दूसरा
तो ये जैसे मुंह में जैसे गीला हुआ, ये संखार है क्या? व्हाट इज दैट? जो It is the result of that, result of craving on the body. so I also saw another woe in which um, I didn't see, but वो अपने आप आया. My mother's passing away, her last woe. So my throat, upper torso, and face, uh, there was एकदम टाइटनड अप हो गया. तो ये संखार है, ये क्या, ये टाइटनिंग क्या है? इट्स अ रिएक्शन. Yeah, this is इज a इट? तो reaction. This is अच्छा, the result of reaction on the body. जब भी कोई strong संखार जागता है तो उसका इफेक्ट बॉडी पे भी होता है. एवरी चित्त में जो भी जागता है उसका साथ साथ कुछ ना कुछ रूप पे असर पड़ता है. सामान्यतः वो इतना कम होता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता. जब संस्कार स्ट्रांग होता है तो डिसर्नेबल इम्पैक्ट होता है, पड़ जाता है. तो अभी इसको इसको आगे कैसे करना है उसका मैंने ऑफ दैट देयर इज नो ग्रेटिफिकेशन. उसको देखना कैसे है आगे? the gratification is in the thought, because you are imagining that, and therefore the thought itself has that feeling of joy in that. Where mere remembering of that creates a joy, and then the impact is happening. So since it is so fast, the only thing which will reduce the speed of that change is by adopting the Adinava Jnana, knowing that danger in it. Once you reflect on the danger in that, then the reaction will come down. So you do it and see that. नहीं, बट विद माय मदर थिंग उसमें तो कोई ग्रेटिफिकेशन नहीं है ना. उसमें तो It's a different thing. Then we can't put everything in the same basket. तो उसको कैसे देखना है? वो तो मेरे को उसका समझ में आया, चीज केक का समझ में आया कि उसका ग्रेटिफिकेशन एंड उसका डेंजर देखना है. एंड बट ऐसे वाले संखार का, जैसे ये भी एक रिएक्शन है बॉडी पे. What was the steps in your doing that? Can you repeat? क्या steps थे? स्टेप मैंने माइंड में ऐसा थॉट, आई डोंट नो हाउ इट केम ऑन इट्स ओन, ऑफ माय मॉम्स लास्ट फ्यू मोमेंट्स, उनके उसका. एंड देन आई सॉ दैट देयर वाज दिस extreme tightening on the upper chest, throat, face area. So what does it show to you? What does the effect on the body show? You can work backwards. Unpleasantness. Yeah. वो था. Yes. So there is a strong residual memory of aversion to what happened. अच्छा. There is a strong residual memory of that. तो उसका एक संखार बना हुआ है कि ये बहुत पेनफुल था आपके लिए वो देखना, because of your attachment to the mother. So you break it apart and see what exactly is happening. And then you can see that this is something which I didn't just want to see. So that is avoidance, that is vibhav tanha. You don't want to see that happening to your mother. Nobody likes to see that happening. So that creates aversion, strong aversion. And that aversion manifests in the form of effect on the body. So it's very, very clear. कई बार अगर आपको नहीं मालूम पड़ रहा, you can work backwards. ये aversion क्यों हो? ये जो body में इतना unpleasant feeling हो रही है strong, उसका कारण कोई ना कोई unpleasant संखार जागा होगा. Then you can work backward and find out, oh, this is what has happened. So that memory of mother's passing away in front of you has created a very strong sankhara in the moment. And when it came up, it disturbed the body. So be aware, okay, this is what is happening in the body. See its impermanent nature,
be aware there is a aversion in the mind and let it pass. And work again and again and again. Then you remember that even now. वो तो by chance हो गया, किसी कारण से कोई संस्कार अटक गई. Now you can work on that. Bring that vision in your mind and then see what it does to body and work it again till you come to accept that all of us have to get separated from our near, dear and near ones. That's the way we understand. We are not normally ready to accept that our near and dear ones will get separated from us. So use that chanting, use that panya to reduce the impact, and slowly it will be there away. समाप्त हो जाएगा. सर ये तो फिर सारा परसेप्शन पे ही आ जाएगा ना, राग होगा या वो होगा, ये तो सारी आपके the way you see it पे आएगा ना eventually. You can call it perception, you can call it wrong perception, you can call it lack of panya. They're all synonyms. From practical point of view, they're all synonyms. No, lack of panya means you have got a wrong perception. हाँ, मैंने मेरा मतलब कि जो भी हम राग या द्वेष जो भी करेंगे, जब उसको बैक एडिट करेंगे, पीछे उसको कर करके देखेंगे, तो इवेंचुअली तो वो इसी पे आएगा ना कि मेरा परसेप्शन ऐसा था, उनका अटैच, इसकी वजह से अटैचमेंट था या इसकी वजह से द्वेष है, तो वो इवेंचुअली तो वो वहां पे आके नहीं. We have to know that, no? Because what is the right perception? Everything is impermanent. So everything is unsatisfactory. Every experience is unsatisfactory. Every experience is impersonal. We forget all of that. And therefore reaction happens. So the forgetfulness of these three fundamental perceptions results in wrong perception. So we hold on to a wrong perception. And therefore the reaction happens. So by various means, जितने भी कुशल उपाय लगा के हम अपने आप को उस तरफ ले जाते हैं, अनित्य बोध की तरफ, दुख बोध की तरफ, अनात्म बोध. That's the whole practice is that कि पांचों खंडों को हम इस तरह से देखने का तरीका बने, हमारा जो विजन हो वो चेंज हो जाए, दृष्टि बदल जाए. पांचों खंड अनित्य हैं, अनसेटिस्फैक्टरी हैं, इम्पर्सनल हैं. ये चीज हमारे बार बार अनुभव पे आ जाए और ये भी समझ में आ जाए कि अगर हम ये नहीं अडॉप्ट कर पाते, इसको नहीं समझ पाते या इसको भूल जाते हैं तो दुख होता है, तो संस्कार जाते हैं. So that's the whole practice really. Okay. हाँ जी, thank you sir. Thank you. So I think we'll have some short parita something. सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सर आपको मेरी? हाँ बोलिए. सर मेरे को कन्फेशन करना है. मेरे से जम नहीं रहा एक्चुअली ना. somehow I am feeling quite discontented. Discontented से ज्यादा क्या कहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि it's nothing actually. I'm not doing anything and it's going on repeating everything. So whatever I do, it comes to same thing. So it's तो इसलिए मेरे का इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है. तो वो इंटरेस्ट ना आने की वजह से फिर मेरा इनपुट और एनर्जी और वो सब बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड और अलग है तो कुछ. तो एक तो ये बात थी, और अगर आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. We need to investigate it deeply. We need to investigate it deeply. इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत है? That itself is a strong resistance in the mind. कि मैं कुछ चाहता हूँ, I want something, and that wanting is my perception. ये होना चाहिए, कुछ साधना करने से ऐसा होना चाहिए. परेशानी होगी कि wanting is suffering.
So you have to find out, what are you wanting? Why are you dissatisfied? What is making you dissatisfied? You have to find that out. No? That you can find out. Or you have to sit with somebody who can do analysis of your experience and tell you, yeah, this is what is happening. Something is, you are experiencing something. You are experiencing boredom. Okay, good. So find out what is the reason of that boredom. That you should investigate. Because I'm not progressing. That's the feeling you have. हाँ, I'm not- मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि I do mistakes again and again. Yeah, so find out why. Find out why. And find out, is this something which is really true of everybody? That they do mistakes again and again, and then they get up and start, get up and start, get up and start. But this time I'm not doing it. I'm not able to do it. I know I do it. मैं तो शुरू से ही, I mean, I started with the mistakes only, na. So, Everybody starts with that. You're not, otherwise you're not but at even this time involved. I don't want to. I don't want to feel. I mean, I don't feel like, you know, getting up and doing it again. ऐसा लग रहा है कि जैसे दोबारा से वही result आने वाला है. So you must investigate that, no? Why I don't feel like getting it. That's very important, actually. This is a story of everybody. You must investigate. That's what we don't do, actually. We give up. Why am I not तो doing कर it? नहीं सकती सर, मैं गिव अप करने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ऐसे भी नहीं रह सकती जैसे मैं रह रही हूँ अभी. Yeah, so find out what is it, where exactly is the shoe is pinching. That you have to find out. You know? The process of teaching of the Buddha are investigative teaching, discrimination. You have to do Dhamma Vichaya. You have to develop sati and then do Dhamma Vichaya. That is the second Bhojanga. When you do it properly, then Virya will arise. Virya will definitely arise. There's no doubt about that. So the key thing is that we should seek assistance, and you have to find time for it. Of course, you're busy. I know that you're busy. So then you have to see, I am busy. Whenever since I'm feeling uncomfortable with this, let me give priority to this also and find out why is it so. Because when the mind is really in a boredom state, in a state of kind of unhappiness, background unhappiness constantly, then your efficiency falls down. Even in your court, when you go, you'll not feel like working. You'll feel like, kya bakwas hai? Everything will seem negative. Yeah, true. It So happened. So you must therefore give it a priority. Okay, let me figure out kya ho raha hai. Why the hell it is going on, isn't it? And obviously you can remember last 3 years that we have been sitting together every day. There have been periods of ups and downs, isn't it? Yes. So this is a down period, fine. There have been periods of up also. So you can see, there is something is happening. There are periods whenever mind goes up, mind goes down. It becomes very bright, it becomes very dull, it becomes bright, it becomes dull. So this is the way mind works. When we are still... This is how I am, sir. This is how I am. I This mean, is how everybody it's a is. whole thing. You're not special. Rest assured. You're not special. Everybody is like that. Everybody is like that. We all go through that. Only thing is, some of us hold on. Don't give up. That's all. That's all. Nothing, no difference. You listen to the story of any meditator who has meditated intensely, you'll be astounded. No, everybody goes through the same phase. सर मेरे को एक बहुत सारी चीज ऐसी लगती है जैसे क्या कहना चाहिए, आई एम नॉट ट्रू टू माई सेल्फ. तो वो जब मैं ट्रू नहीं होती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट कमिंग, यू नो, मतलब अपने सच्चाई वाली बात होती है ना वो, दैट even if I speak. Good. Let me break it apart. Who is not true to himself? Who is there who is not true to himself? Again, sir, वही question आ गया. Yeah, there's no one here.
It is just mental factors arising and passing away. And you are holding on to those factors. This is me. This boredom is me. This inability to meditate is me. No, it is just a mental factor which arose because of various conditions. You all experience that. Everybody, nobody is exception. We all go through that. Only thing required is persistence. Anti paramam tapoti tikha. That's it. I will not give up. Even if the mind is going to pits, I will not give up. I'll observe mind going to pits. And you'll come out of it. Just this resolution, you'll come out. If you give up, then it I becomes will more not. difficult. I It- will not. It becomes more difficult. So good, very good. Hold on and find out. I know you can. Find out. Sit quietly and find out. Yes, sir. Okay? Good. Best wishes. Yes. Bye-bye. Can I ask one question? Bit louder. Sir, can you hear me? Yeah. Sir, I just wanted to ask that sometimes what happens is, like maybe it was happening before also, but now I've become quite aware. So whenever somebody is thinking about me or, whatever is happening in the surroundings, so thoughts like them, those thoughts just come in my mind and they play. Earlier, maybe I was not able to recognize that these are not my thoughts, but now I've been able to recognize somebody else is thinking and I'm just the receiver or whatever. I know the solution is that, I should just watch it and not react to it. But a lot of times, I tend to react, and I also see that, I want to understand firstly hota kyun hai. And the second thing is, I just see that, that's how karma attracts you. Because those thoughts, they just feel so much like your own. And, you want to react. And aate bhi, matlab, because of circumstances. I mean, I can just see the entire cycle, but I don't understand how is this happening. And I mean, is there a better way of controlling and reacting and to all of this that's like happening? I don't know if you've understood my question. I hope so. The first thing is that we understand what you say, thoughts are coming, it means they are coming uncontrolled manner, or you are thinking like that. They are coming uncontrolled. They are automatically coming. You're sitting quietly and some strange thoughts are coming. Is that way? Or No. you're listening something from others and then the prapanch is happening. So typically what happens is I know somebody is thinking about me and I am engrossed in my work. But No, how do you know somebody is thinking about you? that's what I'm telling, because because I'm working, I'm engrossed in my work and suddenly, those thoughts keep coming. And What I've thoughts? verified anything, whatever they might be thinking about me, and I've verified with those people, like, are you thinking about me or something? So you think when you're working, you get a thought that people are thinking about me. No, I get a thought of what they're thinking about me, and then Okay. now I'm able to recognize, this is not something that I'm thinking, but somebody is thinking about me. Okay. I see, and a lot of other things that I absorb from the surroundings, I'm able to know ki, this is not, I don't know, I mean, it's me feeling or what feeling, that's what I want to understand. But I'm able to tell apart ki ye surroundings se aa raha hai, matlab environment se aa raha hai. And I'm also able to tell it because, my mind is generally engrossed in doing whatever I'm doing. So एकदम randomly start हो जाता है या फिर I don't have a reason to think about those things. वो अपने आप चालू हो जाता है. And I have verified it with people that, something, people are thinking. You verified, you means you talked to those people and they said, yes, we were thinking about you in this manner. Yes. So I am not able to understand, and these thoughts feel so much like my own that I tend to react to them. तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है. The one immediate thing it comes to my mind is the basic teaching that
whatever we experience in life is the result of our karma. Whatever we experience. Now, it's a pretty drastic statement. People don't normally make such statements. But listening to you, I'm speaking out in that manner. It's not that it is being made up by me. It is the interpretation of the teachings of the Buddha in some sutta. And of course, in Abhidhamma, it's absolutely clear. So, that's what is called Kamma Vipaka. And whatever we are experiencing is now an opportunity for us to practice, to be aware, to have sati and panya, to be aware and have wisdom to let them go, not to respond to them, not to react to them, and let them pass away like clouds coming and going out. So there are teachings of that kind, that the thoughts in the mind, that the pure mind is radiant and the impurities come like clouds passing and they pass away. Now, it's obviously a very big training required to be able to see that. So that requires a sufficient amount of mental training so that you don't hold on to these thoughts. That's the practice of Shil, Samadhi, and Panya. So as we practice them, as we become stronger in our Samadhi, as our precepts become absolutely perfect, so that we don't have any wavering of any kind, as our Samadhi becomes strong slowly and slowly, then we are able to handle these things pretty confidently, and slowly we get the dexterity to let them, see them arise and pass away, see them arise. And even if you react, then we know what to do. If you react, we know what to do, just as I was discussing here. Just one more example of how it happens. One day I was at my workplace and, I just felt like crying. I did not have any occasion to cry, but I knew this was coming from. Say it again. Okay, so one day I was just sitting at my workplace and I felt like crying. And, इससे पहले जब मेरा meditation इतना deep नहीं था, तो मुझे, I was a person who would not cry. मतलब I would not show my emotions very easily. But now I feel that I have become so sensitive to, to what is happening. वो एकदम, my body starts to react. And then I'm like, your emotions should become strong. Your handling capacity should become strong. Agar body itni sensitive hogi that, I react to everything so much that I don't know, I can just see my body, and I have discussed this with a lot of other meditators also. ये मेरे को कम से कम 2-3 लोगों ने confirm किया है कि उनको भी होता है. Somebody is crying, I immediately start crying because, it is happening to them. And I know, it's not me, it's coming from somewhere else, but then it plays in my body as if, it is happening to me. And then I obviously try not to react, but I'm not able to control all the time. So मुझे लगता है कि meditation करने से इतना sensitive बन रहे हो कि sometimes like that. Sensitivity has to go hand in hand with panya, hand in hand with wisdom. If we develop strong sensitivity by maybe practicing in a particular manner, and we don't have the wisdom of impermanence and impersonality with it, then this will happen. This will naturally happen. So we have to develop that reflective ability to be able to analyze our experiences and give attention to them. Why is it happening? And investigate, just as I was discussing with Payal some time back, about her issue about her mother's passing away in the last moments. So if you work it backwards and see it forward, then the thing becomes, we become observers of what is happening rather than experience kind of enjoyers or sufferers of that. In Hindi, there's a beautiful word, दुख का भोग नहीं करना चाहिए. हम दुख का भी भोग करते हैं. You understand Hindi? दुख का प्रभाव होना चाहिए हम पे. वो प्रभाव क्या होगा? We understand suffering should be overcome. So that is a very powerful word. हम सुख का भोग तो करते हैं, we understand.
but we don't realize कि हम दुख का भी भोग करते हैं. Just keep on absorbing it, and we don't allow it to impact us. Suffering is a divine, if I may use that word, divine teaching. Something is amiss. My mind is not working properly. That's the meaning of it. So, if I have that understanding, then I will investigate and figure out what's going on. Yeah, I can. A good meditator can figure out. He has to be just given a cue how to figure it out. He has to be given a cue. That is, yeah, you work it on the basis of Pratyekshya Samutpad, you work in the basis of Khandas, you work on the basis of Four Noble Truths. There's so many paradigms given. Now, depending on the situation of a meditator, one can find out what will be the best thing for him or her. So you must reflect in that manner. And, consult some senior meditator who can give you advice in that direction. So it should be certainly within the scope of meditation and teaching of the Buddha to handle it. Absolutely. Okay. So maybe request Bhante for closure. Sir, just to check a quick technicality, आपने अब 2 बार मैंने सुना ये कहा है कि we continue to work on रूप खंड, लेकिन उस Yeah, it was a mistake. What I meant was we continue to work on roop as a form. कल जो yeah, हमने- object of I. I mean, Yeah, or the working is actually now all 5 together. yeah. But today you seem to have emphasized Vedana. I was going back and listening because I joined late to the instructions. उसमें आप ये भी कह रहे हो, maybe you can just clarify. I heard you say something about paying particular attention to Vedana. Is that right? Yeah, because this question was raised yesterday. हाँ जी. Feeling of कि वेदना महसूस नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रतिक्रिया तक हो जाती है तब पता चलता है. Sure, yeah. So the idea was that we should try to train our mind कि प्रतिक्रिया ना हो उससे पहले हमें मालूम पड़ जाए, which is quite a task in many cases. Unless we have a reasonable modicum of dispassion, reaction इसको रोक पाना काफी मुश्किल हो जाता है. So in the light of yesterday's discussion, I was pointing out, yes, to be able to feel the truly, especially because we are used to seeing only the body continuously. So when you see a form, physical form, and then be aware कि मुझे अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, साउंड अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, इससे पहले कि हम उसको नोट करें प्रतिक्रिया हो जाती है. So we try to be mindful. Oh, I have to see that. Then hopefully the instances of reaction will come down. So we are still in the the mind is very peaceful and nice, in a good state. Then external disturbances, we are able to tackle them very easily. Because we become aware of unpleasant. It's okay. We implicitly become aware. We don't explicitly may say it. But when the mind is absorbed in something, then it becomes, we get lost. अभी जैसे मैंने समझा है आप ये कह रहे थे, but I mean Abhi is in this phase that one actually identifies and deliberately brings about that principal object of I that one knows is a primary sankhar, is a continuous obsession, isn't it? कल जब हमने कहा था कि should we move to the next auditory, people said let us work for some more days. तो ये हफ्ता और हम यही करेंगे. Right, but if I notice in effect ये हो रहा है, the different people are actually anyway encountering their principal sankhar. That is what's happening, and these are not necessarily objects of the I, like we heard 3 examples just now. Yeah, some of them that's happening by its exactly process of meditation or some sankhara rising. Yeah. See, the picturization of the last moment of a mother is a mental thing, but it's associated with the form. Associated with the perception of a form as my mother, and therefore
that has a relationship of that some kind. Obviously, they are all interrelated. It won't be a single type of interaction which happens in any, even with the form, especially when it is a living form. Your voice is involved, so the form is involved. So there will always be multiplicity, but what we want to focus is go one by one and eventually put all of them together, just as we did last year. या इन इफेक्ट ऐसा लगता है कि वो कभी कभी वो वैसे भी वो टुगेदर हो जाता है, isn't it? Yeah, it naturally happens. It naturally happens. Good. So request you, Bhante ji. सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अखिलादेवी स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि Pay respects to Bhante ji. Pratham pranam. Nityam. Satyam. Thank you all for sharing your questions and concerns. निखिल आप एक मिनट बंद करोगे?